Okay, coming towards new fascism, the contemporary ideas. Though fascism has been shunned, but new flavors of fascism have risen. Now, new fascism introduction. So after the World War II, the fascist parties were banned in Italy and Germany, but the fascist ideology endured. So fascist politics was abolished, but the fascist mind is still there. So a number of European political parties and the movements, they have their ideological ties and they are ideologically inspired by the fascism. These new fascists, they include the National Alliance in Italy, National Front in France, the Republican Party, the National Democratic Party in Germany, the Freedom Party of Austria, the National Party in Great Britain. All of these are basically the examples of the new fascism policy. जी बेटे जी कहो. बिल्कुल आ जाती है बेटा, ये बहुत ही कीमती सवाल है. पहले तो अपना नाम बताओ. मारो. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही कीमती आपने सवाल किया है. और यस, आप ध्यान में रखें कि नेशनलिज्म इज नॉट फैशिज्म बेटा, लेकिन जो अल्ट्रा नेशनलिज्म है विच इज श्योरली फैशिज्म. यानी मिसाल के तौर पे अगर जो है मुझे अपने वतन से प्यार है तो ये तो हो गया पैट्रियोटिज्म, ठीक है. अगर मुझे अपनी कौम से प्यार है तो मैं नेशनलिज्म है. लेकिन अगर अपनी कौम से इतना प्यार हो जाए कि मुझे बाकी लोग जो हैं वो कम नजर आना शुरू हो जाएं, या मैं कहूं कि बाकी लोग घटिया हैं या बाकी लोग जो हैं उनको क्रश कर दो, तो ये जो पैट्रियोटिज्म है इसका जो प्रैक्टिकल डायमेंशन है वो बड़ी ख़राब है. ये मैसोलिनी और जो हिटलर थे, इनका भी बुनियादी तौर पे यही था कि ये कहते थे कि अगरचे ये अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा सोचते थे, लेकिन वो ताकत के जरिए उन्होंने कहा कि दुनिया में एक ही कौम है. मिसाल के तौर पे मैंने एरियन रेस की बात की, तो हिटलर ने जर्मनी की जो अपनी कौम थी उसको बताया कि जी हम बहुत ताकतवर लोग, हम बड़े मार्शल रेस हैं, हमारे पास ये बर्थ राइट है कि हम पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करें. अब इस तरह बाकी दुनिया और बाकी कौमें जो इस फिलॉसफी को नहीं मानती वो इसको क्यों अडॉप्ट करेंगी, उन्हें तो अपना आप खतरे में लगेगा. इसी तरह इंडियन आरएसएस जो है, जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इंडिया के, जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो वो आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय सेवक संघ. तहत भी ये है कि ये जो मुसलमान हैं और ये जो दीगर मज़हब के लोग हैं, ये नस्ली तौर पे पलीद लोग हैं, लिहाजा इन लोगों को या तो ये पाकिस्तान चले जाएं तो या यहाँ पे रहना है तो हमारे ग़ुलाम बन के रहेंगे, क्योंकि वी आर द मार्शल रेस. अब इसका मतलब है आपको अपनी कौम से प्यार करने, अपने कबीले से प्यार करने का तो हक है, लेकिन अगर कबीले से प्यार इस हद तक बढ़ जाए कि आपको दूसरे लोग जो है वो एग्जिस्ट ही ना करें आपके मुताबिक, तो दिस इज़ समथिंग वेरी डेंजरस, जिससे फिर दुनिया के अंदर जो है वो मसाइल क्रिएट होते हैं और फिर जो है दुनिया के अंदर लड़ाई, मार कुटाई और इस किस्म के जो मसाइल हैं उनके खतरात जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो बढ़ जाते हैं. तो इसलिए ज़हन में रखिएगा कि जो है जहाँ पे अल्ट्रा नेशनलिज्म या सुपर नेशनलिज्म आ जाता है तो वहाँ पे फिर जो है वो फैशिस्ट जो है आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो ही प्रिवेल जो है वो करती हुई आपको नज़र आएंगी. एनीवेज, सो जी जी कहो. कौन सी सोशलिज्म आपने पूछी है? देखिए, जो क्लासिकल सोशलिज्म है वो बुनियादी तौर पे रेशियल सुपीरियरिटी की बात नहीं करती, वो है क्लास स्ट्रगल.
ठीक है। तो उनकी कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी जो है वो हमारे सामने ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर हम जो है वो बुनियादी तौर पे कोशिश करें कि उसको हम फैशिज्म के साथ जोड़ दें। हाँ, सख्ती फैशिज्म में भी सख्ती है, नाज़िज़्म में भी सख्ती है और सोशलिज्म में भी सख्ती है। सख्ती इसलिए है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है। तो इस वजह से फील होता है कि चूंकि वो सख्ती की तरफ माइल होते हैं तो लगता है कि वो फैशिस्ट हैं, लेकिन वो फैशिस्ट नहीं है। और दूसरा कि राइट और लेफ्ट, दुनिया राइट और लेफ्ट की बात करती है, एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स के मुताबिक दुनिया चले तो वो राइटिस्ट हैं। अगर वो इनकलाब के जरिए कोई तब्दीली लाने की बात करते हैं तो फिर वो लेफ्ट हैं। तो फैशिस्ट और जो 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 नाज़ीज़ हैं ये अल्ट्रा लेफ्ट पीपल हैं, और अल्ट्रा लेफ्ट जो हैं वो आज की दुनिया में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि फैशिज्म तर्ज की पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है, लेकिन फैशिज्म का वो जो ज़हनी जो बुखार है वो अभी तक मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है। आई होप कि मैंने आपकी बात का जवाब दिया। हाँ, ब्लेस यू, और इसी तरह दिलचस्पी लेती रहो। Okay, ji. So coming towards the current scenario, so I was talking about the new fascist political groups discussed on the previous slide. So these groups have either espoused fascist principles or explicitly appealed to the constituencies supportive of these principles, and none of these principles. None of these groups is strong enough to operate as a dominant power within its own country. However, each group has successfully placed candidates in office in recent years. Okay, new fascist ideology. It is also evident also in the actions of a number of groups not formally affiliated with the parties just mentioned. But these groups include the skinheads, the followers of new Nazi musical groups, the racist and the anti-Semitic hate groups that explicitly link their politics with the legacy of Hitler or Mussolini. Okay, such groups differ in terms of their level of organization, with some groups exhibiting a highly organized leadership structure, whereas others are very decentralized. What makes these groups significant in terms of modern ideologies is the fact that they illustrate the survival of fascism into the post-World War II period and are movements with sufficient power to affect the government and the society. In Germany in 1992, for example, authorities reported that more than 2,000 acts of violence perpetuated by hate groups, espousing to varying degrees of new Nazi attitudes. So these groups attacked the individuals perceived to be the foreigners in Germany or the German cities, right? For example, as German in 1999 and 2000. Okay, next slide. Again, Vladimir Lenin's point of view regarding fascism. He says, fascism is capitalism in decay. This is a sheer critique. Next slide. Okay, how Mussolini sees fascism? He says, inside every anarchist is a failed dictator. अब ये ideas की जंग, there is a basically a confusion and basically a verbal ideological war going on between the pro and the con of fascism. Next slide. Mussolini says that democracy, now Mussolini talks about the defects of democracy. For example, let's start studying.
He says democracy is talking itself to death. Now, this system is by birth meant to die. The people, they do not know what they want. They do not know what is the best for them. There is too much foolishness, too much lost motion. I have stopped the talk and the nonsense. I'm a man of action. And democracy is beautiful in theory, but in practical, it is a fallacy. So you in America, they will see the defects of democracy one day. A clear message of Mussolini against the capitalist world. Now, Henry Wallace, he says a fascist is a person whose lust for money or power is combined with such an intensity of intolerance towards those of other races, parties, classes, religions, cultures, regions, or nations as to make him ruthless in his use of deceit or violence to attain his ends. Okay. Next slide. Okay. Fascism is cured by reading, and racism is cured by traveling. It's a lovely message. Okay, now come towards Friedrich August von Hayek, a great economist, a great economist. He talks that fascism is a stage reached after communism has proved an illusion. Okay, next slide. A great name, Bertrand Russell. This man is basically a social democrat. The theory that we just read it, we just discussed. So he was a social democrat. He talks that the first step in a fascist movement is that the combination under an energetic leader of a number of people who possess more than average share of leisure, brutality and stupidity. The next step is to fascinate fools and muzzle the intelligent by emotional excitement on one hand and terrorism on the other. Okay, then American President Franklin D. Roosevelt. This man was American president during Second World War. He says the liberty of a democracy is not safe if the people tolerated the growth of private power to a point where it becomes stronger than the democratic state itself. That in its essence is fascism. Ownership of government by an individual, by a group, or any controlling private power. And with this we have completed today's lecture. I really enjoyed